कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर था कि पॉलीमर का मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं आपस में एंड दे कंबाइन टू फॉर्म दिस वन लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल। और कंडेंसेशन का मतलब है वाटर प्रोड्यूस होगा व्हेनेवर अ पॉलीमर इज प्रोड्यूस्ड। सो पॉलिएस्टर की एग्जांपल की थी। पॉलिएस्टर की एग्जांपल में था कि देयर वर टू मोनोमर्स 1 एंड 2, वो दोनों बस रिपीट होते रहते थे ऑल्टरनेटिंगली। डायोल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डायोल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड चलता रहेगा थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। एंड उनके बीच में H और OH रिमूव होते जाएंगे, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स वुड बी प्रोड्यूस्ड एवरी टाइम, वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड एंड बीच में ना ये एस्टर लिंक रह जाएगा, serial bond O would combine with the O. So that's the first type of polyester. Polyester के examples थे clothes और fabrics में use होता है। अच्छा उसका नाम ही नहीं मैंने लिखा, ये बड़ा important है नाम। जो clothes और fabrics के अंदर use होता है ना, that's called terylene। ठीक है, this is a very important name। और फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि फैट्स भी कुछ इसी तरह के होते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल होता है एस्टर लिंक फिर मॉलिक्यूल एस्टर लिंक। आई इवन शो यू अ फैट मॉलिक्यूल लाइक एस्टर। फैट का मॉलिक्यूल थोड़ा इट्स कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, पता नहीं क्या है ये जिस तरह, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ लार्ज मॉलिक्यूल। लेकिन फैट का जो मॉलिक्यूल होता है दैट्स नॉट, आई मीन इफ यू कैन सी ओवर हियर देयर इज एन एस्टर लिंक, यहाँ बीच में भी एस्टर लिंक है। तो फैट्स आर काइंड ऑफ लाइक पॉलिएस्टर्स। अच्छा एनीवेज, फिर हमने लास्ट टाइम हमने किया था पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स था कि नायलॉन ropes, fishing nets, ये synthetic polyamides थे, and then you had, one second, let me add people. अच्छा, you had synthetic polyamides and then you had natural polyamides, which were proteins. Synthetic किससे बनते थे? Dicarboxylic acid, यानी एक molecule which has carboxylic acid on both sides, a molecule which has NH2 on both sides, और वो बस इसी तरह alternatingly these two monomers are going to repeat, and water बीच में से निकल जाएगा and they're going to connect, and this is called your amide link. Serial bond over here from carboxylic side would connect with the NH from the amine side, and they're going to connect, and this is your amide link. बीच में ना हर जगह serial bond O NH, serial bond O NH. So this just keeps on repeating. So which is why it's called a polyamide. फिर प्रोटीन जो थे वो थोड़े से डिफरेंट थे कि प्रोटीन का जो मोनोमर था ना that's different. They made from amino acids. प्रोटीन का जो मोनोमर था ना दैट वाज एन अमाइनो एसिड, उसके अंदर अमाइन ग्रुप भी होता है और एसिड ग्रुप, दोनों एक ही के अंदर होते हैं। But एक side is carboxylic acid, the other side is amine. This one molecule is going to have an amine and carboxylic acid on one side. एंड में चीज तकरीबन वैसी बनती है कि इसका H और इसका OH जो है वो रिमूव हो जाते हैं, इसका H OH बीच में से रिमूव हो जाते हैं, serial bond O gets connected with the NH and they join together and they form an amide or a peptide link and they're called polypeptides. Bio के अंदर ना this is called peptide. So we did a few examples related to this as well. Now the thing is, and we're going to continue. अब क्या करना है इसके बाद? What we're going to talk about is we're almost done with organic chemistry. What we are going to talk about is एक last रह गया. The last one that we have to deal with is they're called complex carbohydrates. वो भी आसान है. So the last one is complex carbohydrates. अच्छा, complex carbohydrates are, ये जिसको आप starch कहते हो, ठीक है, that's starch. बनता किससे? It's made from monomers जो simple sugars से, like glucose. So glucose is the molecule that makes up a starch molecule.
अच्छा ग्लूकोज किस तरह होगा? अब ये नॉट ग्लूकोज का एक्चुअल मॉलिक्यूल में दिखा देता हूँ. एक्चुअल मॉलिक्यूल काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है. सो इट्स लाइक इफ आई C6H12O6 होता है. Now this is what a glucose molecule looks like. मतलब अगर एक सेकेंड कोई प्रॉपर ये वाला सही है. अच्छा, this is what a glucose molecule looks like. Now you don't need to remember this. Even if you try, you probably मुझे याद नहीं रहता तो you won't be able to remember what a glucose molecule looks like. What you just need to remember is कि glucose की एक simple version, simple description. Glucose is a molecule that has OH groups on both sides. इस साइड पे भी OH है और इस साइड पे भी OH है. It has OH groups on both sides. और स्टार्च जो है ना वो इन्हीं मॉलिक्यूल से मिलके कंबाइन होके बनता है. So you're going to have another molecule and it's going to have OH groups on both sides. Actually सारी ग्लूकोज हैं तो सारे एक जैसे ही होंगे. Then you have another molecule and that is going to have OH groups on both sides. Right? So all these glucose molecules are going to combine. A combination उसी तरह हो गया. Exactly the same way. It's a condensation reaction. The H would be lost and the OH would be lost. Now, इस केस में it really doesn't matter कि किसका H किसका OH lose हो रहा है. The OH and the H is going to be lost. The H would be lost, and the OH from someplace else would be lost. So, and this just keeps on repeating. And the end result is what you're going to get is all these molecules. They're going to get connected with each other. The only thing left in the middle would be this oxygen over here. Either be in a beach where there's this oxygen that's going to be left. Okay, so that's the only thing that's going to be present in the middle. The beach में there's going to be an oxygen. इधर भी beach में there's going to be an oxygen. इधर भी there's an oxygen. यहाँ पे भी continue कर रहा है. So this is what a starch molecule looks like. ठीक है, so simple. You just have to. You don't need to know the structure of glucose. You just need to know this thing, this diagram. कि ये सारी चीज जो है ना combine होके, it's forming. It has ended up forming this molecule over here. That is about it. और इसकी जो repeat unit होता है ना, if you want to, I mean, this is the thing that's repeating over and over again. Okay, box O. This is the thing that is repeating over and over again. That's the repeat unit representation of this molecule. And this is what glucose is. ठीक है, is this clear? Is it Iram, Sidra, is this clear? बाकी में Ahmed clear? Yes. Yes, sir. अच्छा ठीक है. With this, we're done with the organic chemistry. This was the last thing. अब हमने क्या करना है? अब हमने दो चीजें करनी है. एक तो रिवीजन करनी है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. And we're going to open up past papers for organic chemistry. Let me just quickly uh, open an organic chemistry worksheet जो मैं आप लोगों को भी सेंड करूंगा. Just one second, let me find it. अच्छा, यहाँ पे पहले थ्योरी की. अच्छा, दिस वन. इसमें मिक्स ही होंगे, वो लेवल IGCSE दोनों मिक्स होंगे. So we're going to start practicing some questions. ठीक है, बीच में फिर assignments मिलेंगी. सारी चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है. So starting with the first one, और इसमें बल्कि let me open the other notes as well. Where's the other board? We did organic chemistry on two boards. So there was एक तो ये था, and then there was another.
ये पुराना वाला बोर्ड था आई थिंक. ठीक है, we'll open both boards. अच्छा, so coming back to this. The first part is okay, they're asking butane is oxidized to a carboxylic acid by oxygen in the presence of a catalyst. The acids formed are methanoic acid, ethanoic acid, and propanoic acid, the first three members of the carboxylic acid homologous series. तो अभी तक तो कोई इशू नहीं है, बस उसने एक कहानी बताई है. And he's telling us that the acids that are being formed are methanoic acid, ethanoic acid, and propanoic acid. ठीक है, he did something. He did oxidation of carboxylic acid. We don't really care. The first thing he's asking for is what's the fourth member of this series? So methanoic acid, ethanoic acid, propanoic acid. The fourth one would be butanoic acid. ठीक है, hopefully अब तक ये सारों को clear होगा. ठीक है, अहमद clear है, ये साथ clear है. Yes. और Yes, फिर sir. अच्छा, फिर उसने कहा है कि then he's asking कि draw the structure of butanoic acid. Butanoic acid का structure किस तरह draw होगा कि and showing all the atoms and all the bonds. The but is 4 carbon atoms. So draw 4 carbon atoms. Carboxylic acid है तो क्या होता है उसमें डबल बॉन्ड हो और उससे क्या एक एक बॉन्ड शो करो. तो OH का भी बॉन्ड शो करो. O और H के बीच में जो बॉन्ड है that also has to be shown. और फिर इसको CH2 नहीं लिख सकते. It has to be 2 H's. This would be 2 H's और इसके साथ कितने एक बॉन्ड ना है, so that would be 3 H's. So Anna, is this clear? Yes. अच्छा, फिर है कि 3 characteristics of a homologous series, मतलब ये family of compounds जैसा alkane alkene. तो हम इसको ना उधर ही देख लेते हैं. हमने 3 नहीं पढ़े थे, हमने 5 पढ़े थे actually. Where's the अच्छा बोर्ड खुला ही नहीं है, just one second. लो खुल गया था. It's 3 characteristics of a तो उसके ऊपर ही कर लेते हैं. It's not opening. Homologous series. Why do you put compounds in alkanes? सारे alkanes में क्या चीज similar होती है? सारे alkenes में क्या चीज similar होती है? Number one, they have the same functional group. They have the same general formula. यानी कोई भी alkene होगा CnH2n होगा. ठीक है, so they have the same general formula. फिर there was एक और था कि they have similar chemical reactions or chemical properties. मतलब सारे alkenes एक ही तरीके से react कर रहे होंगे. So similar chemical properties. And then you had they show trends in physical properties. जैसे alkane और alkenes usually low melting points होते हैं. Alcohols and carboxylic acids usually high melting points होते हैं. Alcohols और carboxylic acids usually liquids होते हैं. और alkenes usually gases होती हैं. लेकिन हर organic compound के जो melting and boiling points होते हैं वो increase होते हैं with size. So physical properties. So all members of these series are weak acids. What's a weak acid? Weak acids ionize partially in aqueous state. और क्योंकि एसिड की भी डेफिनेशन देनी है, मतलब एक तो बताना है वीक, तो दे आयनाइज पार्शली in aqueous state and they produce fewer H plus 1 ions. So they produce fewer H plus 1 ions. फिर वो कह रहे हैं कि carboxylic acids react with alcohols to form esters. Ethanol reacts with ethanoic acid to form the ester ethyl ethanoate. Give the name of the ester that is formed. ये ester हमने किए थे. तो पहले तो फिर से रिवाइज करें. प्रोपेनोइक एसिड और मेथनॉल किसका बताया था? मेथनॉल 1 कार्बन एटम.
तो क्या होगा उसके साथ? इट्स गोइंग टू बी OH, अल्कोहल, मेथनॉल, इसके साथ 3 H होंगे. What would be propanoic acid? Propanoic acid would be 3 carbon atoms. और मैंने कहा था कि दोनों के functional groups they should be in front of each other. So draw the carboxylic acid the other way around, right? So this is propanoic acid. इसके साथ there would be 3 hydrogens, and this one will have 2 hydrogens. Or what's going to happen? How would they react? The way they're going to react is that the H and the OH are going to be removed. ठीक है, it's going to be a condensation reaction. So remove them. तो इनको निकालो बाहर and join them together. इसका जो O है ना, that would link up with this carbon atom. So this is your ester link. This in the middle is your ester link. और ये आपका ester बन गया. तो उसने नेम और फॉर्मूला दोनों पूछे थे. तो अच्छा, जब एक लाइन दी होती है तो फॉर्मूला कंडेंस करके लिखना होता है. वो मैं बता देता हूँ कि अच्छा पहले तो नेम कर लेते हैं. नेम क्या होगा? मैंने कहा था एस्टर लिंक के दोनों साइड्स पे. दिस इज प्रॉप 3 कार्बन एटम्स. दिस इज मेथ, क्योंकि इस साइड पे सिर्फ एक कार्बन एटम है. कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड दैट वुड बी कॉल्ड O8 and the alcohol side is called YL, so it's methyl propanoate. अच्छा, इसकी कंडेंस वर्जन क्या होगी? कंडेंस क्योंकि एक लाइन दी हुई है, you can't, I mean you have to fit. Remember कि if you're given just one line, there's nothing wrong with this. I'll even advise you to go for drawing the complete structure, क्योंकि इसमें there are lesser chances of making mistakes, क्योंकि आपको नजर आ रहे हैं कौन कितने bonds बना रहा है. अगर कोई एज कम होता ना तो आपको नजर आ जाता कि this carbon, but if I had forgotten to draw this H over here, then probably I can spot that easily कि मतलब this carbon is not making 4 bonds, so I can at any point add an H. ठीक है, so I'll advise you to go for the whole structure. लेकिन अच्छा, एक तो उसके फॉर्मूले का उसने बिल्कुल ही जनरल लिखा हुआ है. नेम द गिव द फॉर्मूला ऑफ द एस्टर, probably in this form, but this form is also fine. I mean, this is the formula of the ester, so you'll get marks for this as well. But since you're only given one line, तो इसको कंडेंस करके किस्सा लिखोगे. कंडेंस करके किस्सा लिखोगे कि ये पहली चीज की है CH3, so C with 3 H's. उसके फौरन बाद क्या आ रहा है CH3 के? there's an O. अच्छा, उस O के बाद क्या आ रहा है? CO, C with O. उसके बाद क्या आ रहा है? there's C with 2 H's, C and 2 H's, so that's H2. उसके बाद क्या आ रहा है? C with 3 H's. ठीक है, so that's like the condensed form of the ester, right? So बोलिए इसका पार्ट है. अच्छा, is this clear Sidra? Is this clear Saad? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, उसी तरह आगे वो फिर कह रहे हैं कि इसका बताओ कि इसका नाम क्या है. तो पहले तो उसको ड्रॉ करो, मतलब बारी बारी लेफ्ट टू राइट चलो. कंडेंस में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ठीक है, तो इसको हम बारी बारी ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले ये जो है ना CH3 है, ठीक है, सो C पहले इसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम नेम करते हैं. तो दिस इज CH3. अच्छा, CH3 के फौरन बाद क्या आ रहा है? CH3 के बाद इट्स CO आ रहा है. तो CO क्या होता है? C डबल बॉन्ड O. अच्छा, उसके CO के फौरन बाद एक और O आ रहा है, सो दैट्स O. और O के फौरन बाद क्या आ रहा है? CH3. ठीक है, ये याद रखना कि उसने कहा है कि ये एस्टर है. एस्टर के अंदर हमेशा C डबल बॉन्ड O और O होता है बीच में. ठीक है, इसलिए मुझे वो पता लगा कि CO है, यानी C with O and then there's another O. अच्छा, anyways, this is the formula. How would you name this? बीच में से तोड़ो. ये एक साइड एक कार्बन है, so that's meth. ये दो कार्बन है, so this side is eth. ये carboxylic acid डबल बॉन्ड O वाली साइड है, तो O8 कर दो. This one is YL, so it's methyl. So the name would be methyl ethanoate. ठीक है, अब एक काम करो जल्दी से, पहले तो एक क्विक काम करो कि draw these two esters.
प्रोपेनॉल और ब्यूटेनोइक एसिड, उसको नेम भी करो, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। सेंड मी द इमेज। और एक और कर दो कि Sir, what we have to do? draw the ester and name it. In number 1, methanol plus methanoic acid, let's say. ये दो, ये जल्दी से करो काम, पहले ये दो। We're going to try and do this question. Complete the equation for the oxidation of butane to propanoic acid. The actually the equation is complete. उसने सब कुछ दे दिया है. Your only thing is you just have to balance this. तो अच्छा, organic के अंदर you have a lot of atoms. I mean कितने carbons हैं यहाँ पे? There I think 12 carbons. तो यहाँ पे भी actually 12 carbons हैं. ठीक है, count the number of carbons. एक molecule में there are 2 carbons here and 1 over here, so that's a total of 3 carbons. And you have 4 molecules, so 12 carbons. So carbons तो equal है. 12 carbons here, 12 carbons here. So both are equal. Hydrogens को कर लो कि कितने hydrogens हैं? There are 30 hydrogens on the left side. तो उस साइड पे भी 30 होने चाहिए. तो पहले तो फिगर आउट करो कि यहाँ पे कितने हैं. 5 और एक यहाँ पे है. So that's 6. 6 hydrogens in one molecule. So there are 4 molecules. So that's 24 hydrogens. तो यहाँ पे ना there are 24 hydrogens. 30 पूरे करने हैं, तो इसका मतलब है इधर 6 हाइड्रोजन होंगे. हाउ कैन आई हैव 6 हाइड्रोजन अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? और फिर आखिरी चीज है कि आई नीड टू बैलेंस द ऑक्सीजन्स. तो ऑक्सीजन किस तरह बैलेंस होंगे? दे आर हाउ मेनी ऑक्सीजन्स? 3 ओवर हियर. तो ये लास्ट चीज हम बैलेंस कर लेते हैं. सो देयर आर 3 ऑक्सीजन्स हियर एंड यहाँ पे कितने हैं? देयर 2 ऑक्सीजन्स over here, but there are 4 molecules, so that's a total of 8 oxygens. तो उनको इक्वल करो तो कितने? 11 ऑक्सीजन होंगे. सो दैट मींस ओवर हियर आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय 11/2. ये 5.5 से मल्टीप्लाई करो तब जाके 11 होते हैं. सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 11/2. दैट्स इट. And name another compound which can be oxidized to propanoic acid. This other compound is propanol. हमने remember we did oxidation of alcohols. ये हमने डिटेल में की थी. होपफुली बोर्ड अगर खुला हो, जस्ट वन सेकंड, लेट मी ओपन द. नहीं, इट्स अगेन रिकनेक्टिंग. नहीं खुला हुआ एक्चुअली. अच्छा, we can go and revise. फिर आएंगे. अच्छा, we can go and quickly revise कि कहाँ पे oxidation. अच्छा, so oxidation ये तो भी शुरू हुआ था. This is oxidation of alcohols. तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? इसके अंदर हमने सिंपल ये पढ़ा था कि if you have any alcohol, ठीक है, any alcohol जो मर्जी है, ethanol है, it would change into ethanoic acid. Propanol है, it's going to change into propanoic acid. That's it. Oxidizing agent डालोगे आप. और oxidizing agents कौन से थे? There was K2Cr2O7, potassium dichromate 6, and the other oxidizing agent that we did was KMnO4, potassium magnate 7. ठीक है. It's actually better to just use, मतलब ये वाला लिखना better है, but both are equally fine. And the conditions that you use is reflux. You heat it, it's acidified, यानी acid डाला होगा. And you're going to heat it with reflux. Reflux क्या होता है? Heat करने को कहते हैं. But with a condenser that's put on top, ताकि वो alcohol जो evaporate होता है ना, वो it doesn't escape into the air, into the atmosphere. तो ये simply oxidation of alcohols है. Methanol oxidizes into methanoic acid, butanol oxidizes into butanoic acid. तो अगर हम वापस जाए over here, name another compound which can be oxidized to propanoic acid. It's alcohol, and specifically which alcohol? It's propanol.
So propanol would change into propanoic acid if it's oxidized. So that's one. अच्छा इसमें हमें ना एक दो चीजें बीच में ऐड कर देनी चाहिए थी जो हम यहाँ पे वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई he's given you sugars carbohydrates ठीक है three of them and he's given you the formula as well and he's asking कि you should identify two common features in the formula of these carbohydrates common क्या है इनमें now it's all pure common sense कि क्या चीज common है what's so common in the formula तो एक चीज one thing that you can clearly notice is that they all contain carbon hydrogen and oxygens so that's the first common thing अच्छा फिर second क्या चीज इनके formula में common है the second common thing is if you observe carefully is कि the ratio of the oxygen and the hydrogen is always 1:2 11 22 5 10 so it's always I mean there's a pattern the ratio of the oxygen to the ratio of the hydrogen it's always 1:2 so hydrogen oxygen ratios are 2:1 okay so these are the two common things that they have uh, so that is what is common between all sugars or the molecules that he has given अभी तो वो कह रहे कि draw the structure of starch ये भी हमने किया है how would you draw this or second draw three glucose units so I'm going to combine the three glucose units I mean there's alcohol on both sides a diol that's glucose then there's another glucose molecule with OH on both sides फिर there's another third OH a glucose molecule with OH on both sides and what would happen is the H and the OH would be lost so the H is lost and the OH is lost the H is lost and the OH is lost the H is lost and so is the OH and you just have oxygens in the middle so uska structure draw kar lo we just drew that so it's going to be like this okay there's going to be O bonded to another O then that would be bonded to O then that would be bonded to the other one and it just continues make sure you draw the continuation bonds okay is this clear is it Iram is this clear Siddha is this clear Anna Yes. अच्छा अब ये कि अच्छा what is an enzyme it's simply remember this it's a biological catalyst that's it वो ये कह रहा है कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है ना स्टार्च का ये ब्रेक डाउन होता है दैट्स हाउ योर बॉडी एब्जॉर्ब्स स्टार्च बट इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस फिर आपकी वो इंटेस्टाइन्स वगैरह या जो इवन ग्लूकोज जो होता है वो माउथ के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाता है so that's how your body actually absorbs food substances बड़े molecules जो होते हैं ना they're broken down into smaller molecules for example if I go back and where's your board and it has closed down just one second चलो वापस याद रखो खुलेगा तो बता दूंगा अच्छा so the thing is कि your enzymes digest ये उसमें अलग से ऐड ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है let that अच्छा ठीक है ये यहाँ पे ना I'm going to add this कि जितनी भी पढ़े ना हमने enzymes जो होते हैं they're biological catalyst and your body has different types of enzymes
So they're biological catalysts, and what they do is okay, they break down them. Uh, they break down. अच्छा सारा miss हो गया. Okay, let me write it on the board. Boards are not functioning. I mean, naturally, they break down complex molecules, macromolecules, like the ones that we just studied. ठीक है, for example, starch, complex carbohydrate, proteins हो गए. वो आपकी बॉडी स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है, दैट्स उसको छोटे छोटे अमीनो एसिड में वापस तोड़ती है, फिर आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है. फैट्स हो गए, फैट्स आर आल्सो हाइड्रोलाइज्ड टू and they are broken down into smaller and simpler molecules. So enzymes do that. There are other ways of doing that as well. You can heat these large molecules by uh, heat them with dilute alkali or acid. लेकिन obviously body तो ये काम नहीं कर सकती ना कि heat them with dilute alkali or acid. Actually वो कर भी रही होती है और stomach is acidic, strongly acidic. तो उस केस में भी these molecules they broke down into simpler, smaller molecules, and that's how your body absorbs these substances. अच्छा फिर ये कि state the molecular formula and the empirical formula of this hydrocarbon. कि you have this hydrocarbon. तो molecular formula क्या होता है? बस total करो atoms को. It's C4 and H8. That's it. Empirical formula क्या होता है? Empirical formula is the simplest ratio. तो C4H8 का simplest ratio क्या होगा? The simplest ratio for C4H8 would be C1 and H is going to be 2. That is what the empirical formula is. तो अब फिर वो कह रहे draw the structure of an isomer of the above. तो C4 isomer draw करना. Isomer would be 4 carbon atoms. बस arrangement different होनी चाहिए. What's an isomer? If you remember isomers were बल्कि एक काम करो, and this is your task, ठीक है, you still have some time. C4H8 इसके मुझे I mean ignore this, don't draw this. Send me 2 other isomers. और मैं फिर से रिवाइज कर दूं. आइसोमर्स क्या होते थे? आइसोमर्स होते थे कि आपने you have to connect 4 carbons with 8 hydrogens. हर दफा अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. ठीक है, like this is one way of connecting 4 carbons and 8 hydrogens. Think of 2 other isomers, 2 other ways in which you can connect 4 carbons and 8 hydrogens.